Good morning. Today I will discuss about law of conservation of energy, proof of law of conservation of energy. That we will prove here that when an object falls from certain height and reaches to that ground level, at every point its energy remains constant. So we will first of all we will take, suppose that an object having mass m, suppose that it is at position A, it starts at this position, initial velocity is 0, and when it releases it starts falling and making here the diagram. Suppose that this position I am marking. During this one, suppose that here a position I will take, this ball passes through position C and I am taking here the position B, or we may take like this also, that B is here and we can take C here. Okay, total height I am taking here h. When the ball starts falling, let's suppose that it covers a distance x. Okay, and so this distance will be h minus x from the ground. Okay, as the ball falls, it's suppose that velocity is here v, and when it touches the ground, just before touching the ground its velocity is maximum, that is v. So what we will write, that let us consider an object having mass m at position A. It starts falling, passes through the position B where its velocity becomes v1, and when it touches the ground C, before touching its velocity is v. So we will find that the total energy at A and B and C, we will prove that. So here at position A, okay, as I mentioned, we can write this one also, whatever I told before that at position A, what will be, that is here potential energy. First of all we will write, that is it is mass, acceleration mg, and height is definitely h, so that is mgh. And kinetic energy, it will be half m into v square, velocity is here 0 square, that is equal to 0, or directly we can write kinetic energy, there is no kinetic energy. Okay, so total energy we can write here, energy at position A, for position A, that is potential energy plus kinetic energy. Potential energy is mgh plus 0, that is equal to mgh. We take equation 1. Now at position B, अब पोजीशन B की बात करेंगे हम लोग. तो here when the ball starts from here velocity, here initial velocity we will take u, final velocity we will take v1. ठीक है, तो here we will use we will write using third equation of motion. So what we will get here, that v square minus u square equal to 2as. After that we will write here in the next, this part we will write that what will we see, or it will be v1 square minus 0 square equal to 2a, that is g, acceleration due to gravity, and s, that is the distance is what, x. So v1 square we got 2gx. Okay, like that we will find here first just v1, then after we will find kinetic energy. Therefore kinetic energy half m v1 square. Okay, so we will write here 1 by 2 into m into 2gx. 2 cancel, we will get mgx. We got kinetic energy. Now we will find potential energy. For that position ऑलरेडी आई हैड रिटेन एट पोजीशन बी. ओके, तो यहाँ पे हम लोग फाइंड करते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, दैट इज एम जी, एंड हाइट
See here, it covers the distance x. So what will be the height? X? No, its height will be h minus x, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये हाइट कितना हो जाएगा? h माइनस एक्स, तो यहाँ लिख देंगे h माइनस एक्स, सो इट विल बी एम जी एच माइनस एम जी एक्स। तो अब टोटल एनर्जी हम लोग निकालेंगे, देयरफॉर एनर्जी एट बी, तो हियर काइनेटिक एनर्जी एम जी एक्स प्लस एम जी एच माइनस एम जी एक्स, this cancel, so it become mgh. You take it, means I am taking here equation 2. दोनों हो गया, पोजीशन A हो गया, पोजीशन B हो गया. Then after we will see at position C, that I am rubbing this one, okay, that we will write firstly that at position C, let the body reaches at C where its velocity becomes v just before touching the ground. अगर हम लोग लिख देंगे कि दैट ग्राउंड पे और इसका वेलोसिटी भी है, मतलब वो टच जिस स्पीड से उसको हिट कर रहा है, ठीक है, तो दैट इज वी. तो अगेन वी विल यूजिंग वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, दिस इज द फॉर्मूला. तो v यहाँ पे v ही है, तो v रहने देंगे. देखो इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? डेफिनेटली जो स्टार्टिंग से चल के आ रहा है, बीच में कहीं रुक नहीं रहा है, दैट वी हैड टेकन द पोजीशन, ठीक है. इट इज 0 स्क्वायर 2, a के जगह पे g हो जाएगा एंड s डिस्टेंस, तो इसके लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा? दैट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड, दैट इज h. सो वी गॉट v स्क्वायर इक्वल टू 2gh. नाउ वी विल फाइंड देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर, तो इट इज 1/2 एम जी, और दैट इज नॉट जी, दैट इनटू दैट वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh, 2gh, 2 कैंसिल, इट इज एम जी एच. ये हो गया. अब हम लोग क्या करेंगे? दैट वी विल फाइंड पोटेंशियल एनर्जी. तो फटाक से पोटेंशियल एनर्जी हम लोग दिखा देते हैं कि इसका पोटेंशियल एनर्जी इस पोजीशन पे क्या होगा. तो पोटेंशियल एनर्जी definitely at this level there is no height, so potential energy will be 0. So we will find total energy at position C. C position पे total energy क्या हो? तो kinetic energy plus potential energy means mgh plus 0, that is equal to mgh. This is equation number 3. And when we compare, just we had seen कि तीनों जगह पे energy same है. So from 1, 2 and 3 क्या हो जाएगा? एनर्जी एट ए दैट इज इक्वल टू एनर्जी एट बी दैट इज इक्वल टू एनर्जी एट सी. इट मीन्स व्हाट? द एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एट ईच every point. If we will calculate, means every point that energy remains constant. This proves law of conservation of एनर्जी. ओके, लाइक दैट वी कैन प्रूव. सो दिस इज वेरी सिंपल. सिर्फ याद रखना है दैट द पोजीशन ए पे, फिर बी पे और सी पे, लाइक दैट वी विल कैलकुलेट दैट एवरीवेयर दैट वी गॉट दैट द सेम थिंग. ओके, सब क्लियर हो गया? ओके, दैट्स